let's talk about what we were discussing yesterday. So yesterday we were talking about this oil and gas pricing. So we kind of understood about this fundamental thing behind different prices for different oil and gas. So benchmark and all these things, we kind of try to understand this. But when it comes to gas pricing, okay, gas pricing is quite difficult. क्यों? क्योंकि जो है gas is it's not that global, okay, like oil, which can be exported from one place to another, okay, but gas is not, okay. So gas always has like a local market, okay. Of course, things have changed with LNG, liquefied natural gas, because now what's happening is even this gas is converted to LNG, and they are shipping from one country to another, even long distances, yeah. And then when it arrives at your port, then you kind of again from LNG you convert it to gas wherever you are supplying. So India is also now kind of importing a lot of LNGs, and in fact, probably you are already aware that there's an emphasis on making gas-based economy instead of oil-based economy. Okay, so there is a lot of emphasis on having gas because of various reasons. Okay, so when we are talking about gas pricing, it kind of what happened is when KG-D6 was discovered in East Coast, at that time, Reliance showed that there's a lot of gas, okay? And so there was a gas price that was fixed from international, some prices. And then when international price went down, still gas price in India was quite high, okay? And so, that was quite difficult thing to handle. So what happened is then a committee was formed, a Rangarajan committee. So so I had given a student a project to work on this one, and so so he had submitted one slide pack with natural gas pricing in India. So let me share that with you. तो अभी उसी को हम लोग देखेंगे, हाँ. So let's look at this one, huh? What he had given. So Nikhil had wait a minute. So this Nikhil Jaiswal had submitted this one. So let's look at this slide pack, and he might have written a lot of things. Is the international gas price,
Of course not, क्योंकि हमने जो बताया जो है, there is a domestic, these gases have typically local market. So what does it says? Natural gas markets are scattered all over the world in regional fragments, stranded natural gas reserves in pockets far away from the market. 70% of the world's natural gas is produced in 4 countries. Yes, of course, US, USSR, Iran, and Qatar. Okay. So, of course, US with a lot of shale gas and oil as well. Iran, which is very close to us, has a lot of gas. Qatar has a company which is called Qatar Gas, in fact. So, USSR, it produces a lot of gas and then it sells to European countries. Okay. Overall, world market getting more and more liberalized, yet the degree of regulatory control is different in different markets. Gas is exported at premium to domestic prices by gas exporting countries, and gas is bought at a premium to domestic prices by importing countries. Of course, so there is no international price for natural gas, okay, and therefore there is no benchmark. Okay, like oil, you have this WTI and and Brent. So all these things you have, but there's no international kind of price for natural gas. And so Henry Hub is typically used in Henry Hub. USA. Okay, Henry Hub price. In India, it says administered price mechanism. So here you have price mechanism, gas on gas competition. It is the dominant pricing mechanism in the US and UK. The gas price is determined by the interplay of gas supply and demand. Of course, see, every time, supply and demand definitely works. Okay, if you have supply, lot of supply for any commodity, whether it's oil or gas or whatever. Okay, and if demand is less than the supply, okay, then there will be a price fall. Okay, and if supply is less than the demand, okay, then price can shoot up like anything. Okay, so so this supply and demand thing, always keep in mind. Okay, this works every time. The only thing is about the elasticity, okay, that we have discussed, right? Elasticity of demand and supply. So think about it. Now, what happens is, even if let's say, you have, let's say demand is 92 million barrels a day, if that is what the demand is, and if supply is simply 91, if then price can shoot up like anything. Okay, and if instead of 92, if the demand, if the supply is 93, oil price may crash like anything. Okay, so and on top of that, there's a lot of kind of speculation in the market. Okay, so that also goes on. So there is a lot of other factors which govern oil and gas price, but definitely supply and demand, it kind of always works. Okay. Over a variety of various different periods, trading takes place at physical hubs. Okay. For example, Henry Hub or national hubs such as NBP in the UK. Oil price escalation, bilateral monopoly. Yes. So oil price, it is the dominant price mechanism in continental Europe and Asia. Okay. So the thing is, if oil prices go up, gas prices have been kind of linked with oil price. So if oil price goes up, your gas price also goes up. Usually through a base price
and an escalation clause to the prices of one or more competing fuels. Okay, important thing, one or more competing fuels. In Europe, typically gas, oil, and or fuel oil. In Asia, typically, crude oil. Bilateral monopoly. The gas price is determined for a period of time, typically for 1 year, through bilateral negotiation at government level. Examples of gas pricing based on bilateral negotiations may still be found in countries where one dominant supplier, the national oil company. So national oil companies, if you look at, let's say, Middle East, there are a lot of national oil companies. And in fact, at most places, oil is kind of nationalized. Places one or a couple of dominant buyers, say the state-owned power company, if it's gas-based or if it's oil-based power company, maybe 1, 2 large industrial companies, a number of immature developing countries, gas market has this structure. 1 or 2. Price margin net back from final product. Yeah, these are net back pricing. Kya hota, we'll talk later. Regulation and all. Gas pricing regime globally. So gas on gas is like 32%. Regulation below cost to 26%. Regulation social political. Oil price escalation is still 28%. India falls. Regulated market. Yes. This is fine. What else here? Gas chain value price. So there is always wellhead pricing. ये तुम्हारा oil में भी होता है wellhead pricing. Then you have bulk gas pricing. Then you have city gas pricing, and then retail pricing. Retail pricing is typically higher than wellhead pricing or bulk and city gas pricing. So let us see. Here we have history of gas pricing in India. So prior to 1970s, gas production was low and prices were fixed by an expert committee. In fact, people used to flare gas. Oil and gas में जो है पहले क्या करते थे कि सिंपली जो है गैस अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम लोग फ्लेयर कर देते थे. But nowadays it's kind of restricted. You just don't flare it. So simply. Between 1970 and mid 1980s, prices were negotiated between public companies and large gas users. So that's quite reasonable. Government implemented APM. APM मतलब क्या हुआ? APM full form. What is the full form of APM? Hello, sir. What is the APM? I don't know, sir. It's administered price mechanism, not administrative. Administered. That's what we have, administered price mechanism. Now, see, when India started liberalization,
in 1991. Okay, 1991. ओह, तुम लोग तो मुझे लगता है कि तुम लोग का सबका डेट ऑफ बर्थ भी बात का ही होगा. हाँ, ओके. सो 1991 में जो है इंडिया started liberalizing its economy. तो जो है we gradually moved towards we kind of abolished, okay, gradually this APM, administered price mechanism. In fact, it took long time to abolish APM in oil and gas sector, and it's a little bit though we have kind of deregulated it, but still there is something which is still there. Okay, it's not completely. I won't say that it's completely free, but yes, government says that we have abolished administered price mechanism. Okay, so in 1987, for gas, this APM was implemented, resulted in controlled prices across different consumers. Producers were allowed a specific return on their cost of production. Okay, so that was happening in 1987. Then 1992, gas pool account was created to compensate for NOCs. NOCs मतलब क्या हुआ? NOCs. जल्दी बोलो. NOCs. चलो अच्छा है, तुम लोगों ने बोला नेशनल ऑयल कंपनीज. नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन नहीं. ओके, नेशनल ऑयल कंपनीज, कॉर्पोरेशन नहीं. ओके, अभी कोई बोलने वाला था नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. तो नेशनल ऑयल कंपनीज. ओके, NOCs मतलब नेशनल ऑयल companies, and MNCs, multinational. So gas pool account was created. Okay, and here you have nominated fields regime replaced by discovered fields regime. Regardless of higher producer price, user continued to be sold gas by GAIL at administered price. Okay, so GAIL जो है वही देता था. Loss was borne by NOCs as under recoveries. Okay. Now see, in between 1997 to 2005, committees were appointed to work out effective price mechanism for gas, and administered prices increased few times. Okay, so देखो 1992, 97, and ये क्या लिखा है? अच्छा, between this and 1.9 USD in 2005. Okay, ये तुम्हारा 1.9 था 2005. But then between 2005 and 2010, ये क्या? NELP. NELP ये सब हम लोग पढ़ेंगे. अभी अगर जानते हो तो लिख दो, but we will study these things. NELP, HELP, ये सब हम लोग पढ़ेंगे. तो NELP जो है, that is new exploration licensing policy. So contracts introduced a parallel pricing system into the gas sector. क्योंकि जो है it was trying to deregulate it, and therefore what happened is you see that increase in APM was $4.2. Okay, 1.9 था, उससे फिर बढ़ा के जो है $4.2 हुआ. क्योंकि NELP में जो था ना, what happened is in NELP producers were kind of were could sell their gas at international price.
ओके, तो ये जो उस समय दिया गया था ना फ्रीडम, तो उसके चलते जो है थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा था. एंड so again this APM was implemented, and that was kind of $4.2 per MMBTU. Okay. इसमें लिखा है कि नहीं, देखते हैं, लिखा होगा. Then you have, okay, so APM gas price is set by the government depending upon the availability of gas in the concerned region. तो ये जो है $4.2 पर MMBTU, ये जो है 2010 में जो है एस्टेब्लिश किया गया. ठीक है. Now North East region enjoys subsidies of 40% on APM price. फिर देखो नॉन APM regime, देखो गवर्नमेंट हैज इशूड जोन वाइज प्राइसिंग शेड्यूल फॉर नॉन APM गैस. नॉन APM गैस कहने का मतलब हुआ जो कि अगर प्राइवेट सेक्टर है एंड इफ दे आर प्रोड्यूसिंग सम गैस, तो वो गैस सेल करेंगे. तो प्रॉब्लम ये हो रहा था कि नाउ एज यू कुड सी दैट if government is saying that I'll sell my gas at 2.52, so private operators cannot sell their gas at a higher price. Okay, क्योंकि फिर कोई लेने वाला नहीं होगा. तो इसलिए जो है बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आए. तो the order of priority is as per the gas utilization policy, while maintaining the sectoral priority preference in allocation is given to APM shortfall before meeting new demand. तो क्या हो रहा था ना कि actually you need a lot of gas. Let's say you have fertilizer industry जो है, they also need gas. फिर let's say you have क्या power sector, okay, gas based power plant. तो देखो nominated block price, so there are certain differences in this prices. Pre-NELP fields, okay, जो NELP में जो field मिला था उसको तो ताकि they could sell their gas or discovered oil and gas at international price, but then those blocks which were given before NELP, तो उनके लिए अलग फिर price mechanism था. So much of confusion that was going on. और ऊपर से जो है देखो कि then there were LNG came in, okay, at that time. So इसमें भी जो है फिर उसका एक प्राइस था. रास गैस जो है which is from Qatar, okay, so उससे हम लोग जो है we could buy this this LNG. फिर देखो NLP fields का फिक्स किया गया था $4.2 पर MMBTU. स्पॉट LNG मतलब क्या हुआ? स्पॉट प्राइसिंग में जो होता है, लॉन्ग टर्म प्राइसिंग तो होता है कि जैसे कि दो कंपनीज के बीच में जो है नेगोशिएट करके जो है वो दैट प्राइसिंग इज फिक्स्ड, दैट ओके फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम we will sell this gas at this price. Okay, but then there is a spot LNG. That means, let's say if there is LNG tanker that is already filled up and it has not been sold out, तो उसको भी जो है you can get that. तो इसका जो है प्राइस जो है वो that was set at $15 per MMBTU. That is spot pricing. You are learning a lot of terminologies. तो और अगर जहाँ नहीं समझ में आया वो थोड़ा पूछ लेना. क्योंकि I may be when I'm talking I may be skipping something or I may be assuming that you know, but if you do not know, just ask me. For proper market development of natural gas in India, Government of India approved the common pool price for fertilizer industry. Okay, क्योंकि fertilizer industry जो है अगर गैस जो है वो ज्यादा प्राइस पर लेगा तो उसका प्रॉब्लम ये है कि फिर जो है गैस का ये फर्टिलाइजर का प्राइस बढ़ जाएगा. ओके,
तो फर्टिलाइजर का फिर प्राइस बढ़ जाएगा तो वो फार्मर्स को फिर वो कॉस्टली फर्टिलाइजर मिलेगा। हाँ, तो क्या हुआ कि देन रंगराजन कमेटी ने एक फॉर्मूला सजेस्ट किया। ओके, रंगराजन कमेटी जो है वो बना और उसने एक फॉर्मूला सजेस्ट किया। Price will be fixed on the basis of average of net back price of Indian long-term gas imports and weighted average of the price at international hubs. देखो ये kind of it's combining lot of things, okay? International prices भी है इसमें, फिर जो है net back pricing जो होगा from Indian perspective। नेट बैक प्राइसिंग करने का मतलब है कि तुम्हारा जो किस चीज का मान लो कि फर्टिलाइजर का प्राइस है, तो उससे कैलकुलेट करते हुए तुम पता करोगे कि अच्छा गैस का प्राइस कितना होना चाहिए। तो वो हो गया। ओके, नेट बैक प्राइस। हाँ, तो उनको प्राइसिंग का फ्रीडम दे दिया कि जाओ तुमको जैसे सेट करना हो। अल्ट्रा डीप वाटर एरियाज, अब जो है डीप वाटर एंड अल्ट्रा डीप वाटर का डेफिनेशन तुम लोगों को क्लियर है कि नहीं? अगर नहीं क्लियर है तो हम असाइनमेंट, हाँ, व्हाट इज डीप वाटर एंड अल्ट्रा डीप वाटर डेफिनेशन। ओके, ये तुम लोग देख लो। हाँ, and high pressure, high temperature HPHT, okay, high pressure, high temperature areas. The gas price ceiling is 6.61 MMBTU. Okay, उस समय सेट किया गया था from April 1st April to 30th September। ये कितना टाइम हो गया? ये हुआ 6 months, isn't it? So now you can see there is something coming up here already. कि 6 months में कहीं ना कहीं गैस प्राइसिंग वो रिवीजन होता है। हाँ, ये तो लग रहा है ना। प्रिवेलिंग गैस प्राइस, ओके, तो इसने गैस प्राइसिंग का लिखा ही नहीं है कि, ओके, सो आई हैव अनदर वन। इसने तो बताया ही नहीं कि रंगराजन कमेटी का रिपोर्ट क्या है। तो लेट मी टेल यू दिस वन। ओके, this is not a PowerPoint, this is a Word file। okay, Word file। तो देखो इसने लिखा है, हाँ, इसने लिखा है रंगराजन कमेटी गैस प्राइसिंग फॉर्मूला। ओके, तो देखो ये जो है
Okay, I think you can see all this. So government notified the domestic natural gas pricing guidelines. Okay, 2014 में जो है, so gave the formula for the price of domestically produced natural gas based on the recommendation of the Rangarajan committee. Okay. तो अब ये जो क्या करता है, ये जो गैस का जो प्राइसिंग है वो every 6 months it's get revised. Okay, every 6 months you get revised gas price. So एक बार जब फिक्स होगा तो वो जो है वो अगले 6 महीना तक चलेगा. तो अब मुझे ये बताओ कि लेटेस्ट गैस प्राइसिंग क्या है. लेटेस्ट मतलब ये अभी फरवरी चल रहा है ना, तो ये तुम्हारा जो है इस टाइम में क्या गैस प्राइस है, कैसे फिगर आउट करोगे? हाँ, कौन बताएगा? गूगल? हाँ, किसी ने तुरंत अभी जवाब दिया. देखो क्या लिखा है, 1.79 पर MMBTU. ये कहाँ से मिला तुम्हें? देखो MOPNG जो है हमेशा एक नोटिफिकेशन देता है, ठीक है. तो MOPNG के वेबसाइट से जो है तुम्हें रियल डेटा मिलेगा. हाँ, तो जब भी चेंज होते हैं गैस प्राइसिंग, ठीक है, तो वो जो है हमेशा वो, अच्छा ये PPAC का जो वेबसाइट है इससे बोल रहा है यार. प्रणव साहब ने लिखा कि गैस प्राइस पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल PPAC. तो गैस प्राइस तो अप्रैल अक्टूबर, हाँ यहाँ पर है डोमेस्टिक. हाँ देखो ये जो है, लेट मी, हाँ ये जो है इसमें है प्राइस दिया हुआ है 1.79 per MMBTU. That is based on gross calorific value. Okay, MMBTU. ठीक है. तो as you can, if you have read already, तो इसमें जो है न्यू डोमेस्टिक नेचुरल गैस प्राइसिंग गाइडलाइंस जो कि रंगराजन कमेटी रिपोर्ट से मिलता है, ठीक है. तो वो जो रिव्यू करता है, तो ये जो कमेटी है वो हर 6 महीने पर जो है इसका एक नया प्राइसिंग देता है, ठीक है. सो दिस प्राइस इज वैलिड अप टू मार्च 21. ओके, अभी जो है अप टू मार्च 21 जो है ये प्राइस वैलिड रहेगा 1.79 पर MMBTU. ओके, तो ये रंगराजन कमेटी रिपोर्ट जो है, देखो इसमें कुछ फॉर्मूला है. इसने क्या किया है, देखो द फॉर्मूला रिकमेंडेड बाय रंगराजन कमेटी इज एज अंडर नेट बैक प्राइसिंग n इक्वल्स टू a माइनस b माइनस c. अब ये क्या इज इंपोर्टेड LNG प्राइस ऑन नेट बैक फॉर्मूला. b इज लिक्विफैक्शन कॉस्ट. ओके, इंपोर्ट किया उसको, अगर गैस है गैस का लिक्विफैक्शन कॉस्ट भी होता है, यहाँ पर लोडिंग किया गया, एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रीटमेंट कॉस्ट. तो ये जो है तुम्हारा, इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो रियल गैस का जो प्राइस है वो केवल मिलेगा, है ना. तो ये N हुआ, और उसके बाद जो है N1 V1, तो ये कुछ एवरेजिंग कर दिया गया. हाँ, अब तो यही है एवरेज प्रोड्यूसर नेट बैक प्राइस. ओके, इंपोर्टेड फॉर ट्रेलिंग 12 months, 12 months तक का वो प्राइस चेक करते रहेगा. ओके, ओके, ओके. So this is what you have. ओके, और इसमें भी अभी बहुत सारे डिटेल्स हैं. इफ यू लुक एट रंगराजन कमेटी रिपोर्ट, तो जो है ना, इतना अगर ये सिंपल रहता तो फिर कमेटी नहीं करानी होती ना. तो
So what it does basically is it tries to look at all aspects, where these gas prices in different countries, और उसको जो है rationalize करके जो है फिर इंडिया में उसको एक प्राइसिंग करते हैं, ठीक है. What about oil price? अभी इंडिया में क्या एपीएम है कि एपीएम नहीं है? एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म है कि नहीं ऑयल के लिए? गैस तो समझ में आया तुम लोगों को. What about oil? ओके, तो यहाँ पर जो है अब एपीएम नहीं रह गया, लेकिन ये जो है रिवाइज होता है. ओके, और ये जो रिवाइज होता है वो कुछ कंपनीज का ये जो है वो मिलकर जो है इसका रिवीजन करते रहते हैं. हाँ, and of course it has IOC has more say into it, although government can claim that it's not administered, लेकिन जो है थोड़ा indirectly जो है कंट्रोल तो रहता है. okay? indirectly कंट्रोल रहता है, क्योंकि एक बात देखो कि almost like 15 to 20 days oil price change ही नहीं हुआ था, and people started saying that probably it was the government that was kind of holding this price stable. Okay, तो उस समय नहीं चल रहा because there was some election time as well. But anyway, so ये तो बहुत होते रहते हैं, but still there is it's by and large it's non-APM. Okay, it's no longer administered by the government. Okay? तो ये जो है अब जो है वो डेली देखोगे जो है पेट्रोल पंप पर प्राइस चेंज हो सकता है. हाँ, in fact if you recall a few years back, at many places you could see this Reliance petrol pump sealed. Okay, वो बने तो थे लेकिन जो है वो कोई चालू नहीं थे. क्यों? You know? गौरव शर्मा. यस सर. पता है, देखे थे कि नहीं ऐसा कि रिलायंस के पेट्रोल पंप जो सील रहते थे? नो सर, देखा तो नहीं था, लेकिन हो सकता है रीजन ये है कि शायद उनकी प्राइसेस उतनी नहीं रही होगी, तो दे कुड नॉट मेक प्रॉफिट. नहीं, तो वो बात नहीं थी. बात ये था, देखो कि जब इंडिया लिबरलाइज हो रहा था, इकोनॉमी को जो है ओपन किया जा रहा था, तो व्हाट हैपेंड इज गवर्नमेंट हैड प्रॉमिस्ड टू कंपनीज, टू ऑयल एंड गैस कंपनीज, दैट बाय 2002, ओके, 2002 तक जो है वो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि वी विल एबॉलिश दिस एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म. ठीक है, ये गवर्नमेंट ने कहा था, लेकिन 2002 भी चला गया, 2004 चला गया, 2006 चला गया, 2010 चला गया, और जो है गवर्नमेंट जो है वो प्राइस को छोड़ ही नहीं रही थी. गवर्नमेंट वाज लाइक नो नो नो, वी विल फिक्स इट. तो जो है व्हाट हैपेंड, सी व्हेन ऑयल एंड गैस कंपनीज दे लुक एट फॉर लॉन्ग टर्म थिंग. ओके, तो उस समय जो है रिलायंस हैड, because the government had said those things in 1998, that we will abolish this administrative price mechanism. So what happened is Reliance started investing in building this petrol pump. Okay, कि भाई जब हट जाएगा तो लोग यहाँ से खरीदेंगे, we will sell it. लेकिन क्या हुआ कि government was not ready to do that. They were saying that okay, you can sell on your counter, but IOC का जो होगा, BPCL का जो गैस स्टेशन होगा, पेट्रोल पंप होगा, वहां पर एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म होगा, वो गवर्नमेंट जो कहेगी उस पे सेल करेंगे. तो व्हाट हैपेंड इज इन दैट केस यू कैन नॉट हैव कंपटीशन, राइट? है कि नहीं? तो निखिल,
यस सर। सुन रहे हो ना? यस सर, यस सर। अच्छा, तो जो है उसमें फिर क्या हुआ कि जो है तो रिलायंस डिसाइडेड टू stop selling through their gas station, through their petrol pump. कहा कि जब गवर्नमेंट जो है when they will abolish this APM, then we will start selling. ठीक है, अदरवाइज compete नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी देकर कितना उसको compete नहीं कर पाए. ठीक है. यस सर। तो इट वाज सील्ड, उन्होंने अपना अपना सील करके रख दिया था. और जब जो है आई थिंक इन 2015 or so, I think 2015, it was then was removed, and it was a good time to remove it because the oil price in the international market was also low, and the government took advantage of that one to remove this APM. Okay. सर एक डाउट था सर। आप पूछो. सर ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस नहीं है, मतलब अभी एपीएम का सिस्टम नहीं है ना सर अभी ऑयल पे? नहीं तो सर जो अभी ऑयल के प्राइसेस होते हैं तो उसको फिर गवर्नमेंट को क्यों कहा जाता है कि आपने प्राइसेस बढ़ा दिए घटा दिए? नहीं नहीं कहा जाता है. मतलब ऐसा उनका कंट्रोल है कि नहीं, मतलब कितना प्राइस है, या बिल्कुल उनके हाथ से निकल गया है प्राइस? नहीं नहीं नहीं, प्राइस उनके हाथ से, प्राइस गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, उनके हाथ में है केवल टैक्स. ओ। ओके. गवर्नमेंट के हाथ में केवल टैक्स है. ठीक है. तो अगर मान लो कि ऑयल प्राइस मार्केट अगर ये इंटरनेशनल मार्केट में कम भी हो गया, लेकिन इंडिया में नहीं दिखता है कि ज्यादा हुआ, क्योंकि जो टैक्स है वो टैक्स जब जब ऑयल प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में घटता है तो गवर्नमेंट क्या करती है कि टैक्स बढ़ा देती है. वो हम लोगों को नहीं दिखता है ना. ओ। हाँ, वो बैकग्राउंड में क्या करती है कि टैक्स बढ़ा देती है. तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टैक्स बढ़ा दिया तो प्राइस तुमको चेंज दिखता ही नहीं है. और इनफैक्ट जब इंटरनेशनल मार्केट में जब ऑयल का प्राइस तुम्हारा जब ज्यादा हो रहा है अभी, तो टैक्स जो बढ़ाया था वो भी कम नहीं कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो फायदा दिखता है, क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है गवर्नमेंट को. ठीक है ना. तो इसलिए जो है टैक्स टैक्स जो है वो कम नहीं करती है. केवल ऑयल एंड गैस ही ऐसा कमोडिटी है जिस पर जीएसटी अभी भी नहीं लागू है. यस ओके. सर। तो जीएसटी तो मैक्सिमम 28% होता है. ठीक है. तो ये अभी भी जीएसटी नहीं लागू है इसमें. तो और अभी देखो कि गवर्नमेंट टैक्स लेकर के कुल मिलाकर ये मोर देन 50% से भी ज्यादा तुमको टैक्स ले लेती है गवर्नमेंट. एंड व्हाई दैट इज सो. देखो क्या है कि टैक्स कलेक्शन भी जो है अपना इट्स काइंड ऑफ स्क्यूड. ओके. गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, गवर्नमेंट का जो खर्च करती है ना गवर्नमेंट, तो एवरी ईयर गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड ऑन लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग एंड सो मेनी थिंग्स. ठीक है. तो दे यस ऑल्सो सर। स्पेंड मनी. वेयर विल दे गेट मनी फ्रॉम? कहाँ से मिलेगा? तो उसको तो टैक्स ही मिलेगा ना. some direct taxes, some indirect taxes, and so many other things. Now, if you look at the government revenue collection, what you will find that in their revenue collection, almost like 2/3, okay, it's like 66% or so, more than 60% of their revenue collection comes only from oil and gas sector. Okay. तो ये जो है ना काफी स्क्यूड है, ऐसा किसी भी कंट्री के लिए होना नहीं चाहिए कि जो है तुम्हारा टैक्स कलेक्शन काफी एक ही सेक्टर में तुम्हारा जो है वो ज्यादा है. ओके. अगर इस सेक्टर में अगर वो अपना कम कर देगा, कि अगर मान लो कि 50% आज कलेक्ट कर रहा है, उसको जीएसटी इंप्लीमेंट कर दो, तो विल हैपन, गवर्नमेंट का रेवेन्यू ऐसे ही हाफ हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर, यस सर। तो जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू हाफ हो जाएगा तो गवर्नमेंट जितने सारे प्रोजेक्ट लॉन्च करती है तो दे कांट इम्प्लीमेंट इट, है कि नहीं? Okay? तो यही प्रॉब्लम होता है. ठीक है. तो ये चीज बिग पिक्चर समझना जरूरी है.
मतलब सर क्रिटिसाइज करने की इसमें कोई बात नहीं है, अगर वो पैसा मतलब किसी पर्पस के लिए ही ले रहे हो, ऐसे सोच सकते क्रिटिसाइज करने के बाद पॉलिटिकल चीजें मत हमसे पूछो, ओके? हैं। I told you that what happens with the government, okay? उसका ओके सर, ओके सर। politics you can think about, okay? What is politics? Whether Manmohan Singh was better or Modi government? I don't want to get those things, okay? सॉरी सर, ओके सर। What happens, okay? तो इसीलिए इकोनॉमिक्स समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? क्योंकि देखो जब उस समय बढ़ता था प्राइस तो काफी बीजेपी ने जो है क्रिटिसाइज किया, लेकिन अब प्राइस बढ़ रहा है तो कोई क्रिटिसाइज करने के लिए तैयार नहीं है. So these things are political issues, okay? So, but the fact is that this is what is happening, okay? How the government gets its revenue. Okay. The question is, sir, who decides the prices of these benchmarks WTI and Brent? ये जो है प्राइसेस जो है ना, जो बेंचमार्क के हैं वो वर्ल्ड मार्केट में जो है वहां पर कॉम्पिटिटिव, जैसा मैंने कहा, डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है, ठीक है? वहां पर जो है पेपर पर ही सारा काम होते रहता है. वहां पर कोई ऐसा नहीं है कि तुमको फिजिकली जो है ऑयल एंड गैस तुमको बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है. लेकिन वर्ल्ड मार्केट में जैसे कि मान लो कि तुम कहो कि अच्छा मुझे जो है इतना मिलियन बैरल ऑयल की जरूरत है, और सप्लायर जो है सप्लायर के साइड से इतना ज्यादा जो है अभी मार्केट में है, तो वहां पर जो ट्रेडिंग होगा तो ट्रेडिंग से जो है तुम्हारा प्राइस जो है वो डिसाइड होता है. हाँ, तो इसी तरह से जो है WTI और ब्रेंट का जो प्राइस होगा दैट इज डिसाइडेड इन द मार्केट, ओके, एक्सचेंज. ठीक है, जैसे हमने बताया था ना कल कि न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में जो है वहां पर यूजुअली WTI का प्राइस जो है वहां पर ही होता है. हाँ, तो अब तो मान लो कि वहां पर, अरे बाबा, ओपेक्स और ओपेक दोनों में बहुत अंतर है. तो क्या लिखता है सब. ओपेक जो है, ओपेक इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. हाँ, और ओपेक्स जो है, ओपेक्स जो है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर. ओके, दोनों में अंतर है. नाउ व्हाट अबाउट ओपेक एंड नॉन ओपेक? ओके, तो ये तुम लोगों को ये सब पढ़ना चाहिए खुद से भी. व्हाट अबाउट नॉन ओपेक? Now, if you look at how many countries are there in OPEC and how many countries are there non-OPEC, and if you look at how much they produce and all these things, okay. So अब जो है what it seems like that OPEC countries have kind of become irrelevant, even though they think that they will try to influence the market. Okay, ये 13-14 कंट्रीज हैं, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, कोई आएगा कोई जाएगा, इसी तरह से जो है. तो they think that they can influence this prices, but seems like with shale gas and shale oil, US has become now kind of net exporter for oil and gas. Okay, I think they became net exporter in 2017. इसके पहले जो था, they were net importer for oil and gas. Now they have become net exporter, and so that way, what has become is OPEC countries have become now kind of irrelevant. Or though of course, if you have Middle East countries in your neighborhood, you would want to get your oil from the neighboring countries than going to far off from your place, right? तो इसलिए ये सब हैं, ये सब ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है, जियो पॉलिटिक्स, ये सब डेफिनेटली अफेक्ट करते हैं टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन दिस ऑयल एंड गैस. हाँ, तो ये तो होता है.
if you look at history of oil and gas pricing, if you look at when there has been attack on any or instability, I won't say attack, instability in any oil exporting countries, तो क्या होता है कि सप्लाई जब कम होने का डर रहता है, okay, when you fear that there will be less supply in coming future, in near future, so what you will do, you will try to buy oil and gas at a higher price, okay, from the market, हाँ. तो ये लॉन्ग टर्म का ये सब अभी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल, तो ये सभी चीजें होती है, हाँ. Okay. Any other question? Any other question you have? So हमने oil and gas pricing थोड़ा बहुत जो भी हम लोगों ने समझा अभी, what we'll do is we'll next we'll try to understand about what is capex and opex, okay. ये जो है capex and opex. तो capex मतलब हुआ capital expenditure, okay. Capex means हुआ capital expenditure, okay. And opex मतलब हो गया operational expenditure, हाँ. See, why we need to understand these things, because ultimately, when we are looking at our cash flow, okay, so we need to understand these things, how much is capex and what is your opex. If you are spending some money for your capex, how long it's going to take to implement one project, what is going to happen to your, production. इसलिए जो है capex and opex. Do you know? Let's say if you start, let's say if you start seismic survey today, or you got a block in an unknown area today, how long it's going to take to put that field on production? Can you give some idea? How long it's going to take? If you, let's say government gives you one block, okay, to start exploring for oil and gas, and let's say you find, you found oil and gas, and you want to put that on stream, okay, so kitna time lagega? Can you give some idea? Okay, so one student says 5 to 7 years. Yeah, that's a reasonable estimate. Yeah, 5 to 7 years. Yeah, it can easily take. Okay, so you can understand that you have to look so much into the future, right? कि 5 से 7 साल बाद जो है oil and gas का क्या price होगा, हम produce करेंगे, कैसे होगा, हाँ? So you have to work out that kind of economics from today, okay? And with so much of uncertainty, okay? That when you got a block, you will be spending so much money, and you may not find anything, okay? You may not find anything. ठीक है, तो इसको जो है हम लोग कल डिस्कशन करेंगे, हाँ, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 4 o'clock, ठीक है, तो जो है कल स्टडी करेंगे हम लोग, हाँ, विल मोर, हाँ, कीप आस्किंग मोर क्वेश्चंस, हाँ, चलो, बाय.